Assalamu alaikum. Our today's lecture is about seed viability. Seed viability means the ability of the seed to grow or to germinate, and there are the different factors that affect the viability of the seeds. Let's start with the definition. There are the different ways by which we can define the seed viability. Seed viability actually the ability of the embryo that is present inside the seed to germinate, and there are the different factors that affect the ability of the embryo to germinate. We can also say that seed viability is actually the properties of a seed to germinate and to grow, or it can also be defined as the seeds that are metabolically active are actually the seeds that can grow into the plants. There are the different factors that are responsible to reduce the germination of the seeds, or there are the different factors that affect the seed viability. So let's see the factors. There are the two types of factors that are involved in the low germination of the seed. The pre-harvest factor means the factors that are involving before the harvesting of the seeds, and then the post-harvest factors. These are the factors that affect after the germination of the seed. So seed coat, pollination, mechanical injury, and microflora and time, these are the pre-harvest factors. So in this video we will discuss only the pre-harvest factors. So let's start with the seed coat. Seed coat is the first factor that can affect the viability of the seed. Seed coat means the outer covering of the seed. So mechanical injury to the seed coat, like by threshing, can contribute to the reduction in the germination. So the viability of the seed is affected due to the mechanical injury in the seed coat. The second factor of the seed coat may be the seed coat color. Seed coat color means the color of the outer covering of the seed. Sometime what happen if the seed coat color is totally different, or it look like pale, or it totally different from the parental seeds, then it may cause the low germination of the seeds, like chickpea, cowpea, pea, long beans. They are associated with the genotypes having white or unpigmented seed coats. So the seed coat in the genotype which have the colors different from their parents, like they are the pale color, they are the white or the unpigmented, they cause the low germination of the seeds. So genotype with the pigmented seed coat showed high level of seed viability. तो जो pigmented होते हैं उनके अंदर जो है वो viability जो है वो ज़्यादा होती है. Pollination, we know what is pollination is transfer of pollens from one plant to another plant, so the different agents. So the whenever there is the incomplete pollination, like जो है वो सीड जो है वो पूरी तरह से pollinate नहीं किया, तो क्या होता है इससे जो है वो सीड जो है वो क्या होता है कि वो ग्रो नहीं करता. लगता तो ऐसे है कि इट इज़ अ सीड, बट इट इज़ actually it is empty. There is no embryo inside the seed, or maybe the embryo partly developed, यानी कि जो embryo है वो completely develop नहीं करता जब incomplete pollination होती है. या ये होता है कि जो कुछ सीड्स होते हैं वो क्या होता है कि जो हेड है उसके ऊपर ही रहते हैं, नीचे जाके जो है वो हाइब्रिडाइज नहीं होते, फर्टिलाइज नहीं होते. अब हमें पता है कि फ्लावर्स और वेजिटेबल्स है उनमें ज़्यादातर हिब्रिडाइजेशन जो है वो होती है. अब हिब्रिडाइजेशन जब होती है तो डिफरेंट कलर के जो है प्रोड्यूस करते हैं.
तो इस तरह से क्या होता है, जब फ्लावर्स और वेजिटेबल्स के अंदर हिब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो क्या होता है, डिफरेंट कलर्स के जो है ना सीड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, विच इज़ क्या होता है, डिफरेंट होते हैं फ्रॉम नेचुरल प्लांट्स। तो इससे क्या होता है, जो वाइबिलिटी है वो सीड्स की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब है मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि मैकेनिकल इंजरी क्या है, ये वो है कि जब किसी भी सोर्स के थ्रू सीड को जो है वो सॉफ्ट करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, तो क्या होता है कि उसकी जो वाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल सर्टेन लार्ज सीडेड लेग्यूम्स जो हैं उनके अंदर मैकेनिकल इंजरी जो है वो जितने डिफरेंट सीरियल्स हैं उनके अंदर जो है वो ज़्यादा होती है। दे आर मोर इम्यून टू मैकेनिकल इंजरी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आपको पता है कि प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक पेली एंड द लेमा। स्मॉल सीड्स जो होते हैं उनके अंदर जो है वो मैकेनिकल इंजरी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और इस वजह से क्या होता है, और जो इस तरह से उनकी शेप जो हैं वो इरेगुलर हो जाती हैं। माइक्रोफ्लोरा में हमें पता है कि फंजाई आ जाती है, एलजी आ जाती है। क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि सीड्स को फंगल अटैक या बैक्टीरियल अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दे आर अनएबल टू जर्मिनेट। और ये क्या होता है, जैसे अल्टरनेरिया है, फुसेरियम है, तो ये क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं इनसाइड द सीड, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो एम्ब्रियो है वो ग्रो नहीं करता। तो इस तरह से क्या होता है कि डिटेरिएशन हो जाती है जब फंजाई जो है उसके ऊपर करती है अटैक। टाइम जो है, टाइम क्या है, डिफरेंट सीड्स फ्रॉम द सेम सीड पॉड विल हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ वाइबिलिटी इन द एम्ब्रियो। यानी कि हर सीड ज़रूरी नहीं है कि एक हमारे पास सीड है तो उसी दिन ग्रो कर देंगे सारे के सारे। हर सीड के अपना टाइम होता है, वाइबिलिटी टाइम होता है जिसमें उन्होंने ग्रो करना होता है, ठीक है। सिर्फ कुछ जो है वो फ़ौरन ही जर्मिनेट कर जाते हैं, कुछ जो है वो डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो टाइम जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इन्वायरमेंटल वेरिएशंस में जो है वो हम देखते हैं कि जो सीड्स है डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वेदरिंग होती है, सॉइल जो होती है वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं हुई होती, जिसकी वजह से जो है ना वो सीड की जो ग्रोथ है वो क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है। तो ये सारे जो थे ये प्री हार्वेस्ट थे फैक्टर्स जो कि सीड की ग्रोथ को अफेक्ट करते थे। तो जो नेक्स्ट होगी उसमें हम पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर्स जो है वो उनको स्टडी करेंगे।